Good morning students. In today's lecture we will discuss the portfolio theory model approach. जैसा कि आपको ध्यान होगा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था that portfolio theory is divided into two parts. One is traditional approach and second is modern approach. Traditional approach हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है. आज हम डिस्कस करेंगे the modern approach. मॉडर्न अप्रोच में आपको ध्यान होगा हमने टू पार्ट्स में डिस्कस करनी थी. इसका फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द हैरी मार्कोविच मॉडल और व्हाट वी कॉल एज एचएम मॉडल और इट इज आल्सो नोन एज मीन वेरिएंस मॉडल. फॉर दिस टॉपिक यू मे रेफर द बुक ऑफ डॉक्टर आर.टी. रस्कल. The HM model, the Harry Markowitz model was found by Harry Markowitz in 1952 and he presented this model in Journal of Finance. According to this model, the model provides the conceptual framework and analytical tool for the selection of optimal portfolio. Optimal portfolio ऐसा portfolio होता है जो कि एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करता है. सो एचएम मॉडल हमें हेल्प करता है ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के सिलेक्शन के लिए. एचएम मॉडल इज बेस्ड अपॉन वेरियस assumptions. Like the assumptions, very first one is investor is risk averse. Risk averse means that investor wants to avoid the risk. He is not risk seeker. वो कम से कम रिस्क पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेना चाहता है. Next assumption is that risk is calculated on the basis of variability in return. इन्वेस्टर कितना रिस्क लेगा ये डिपेंड करता है कि उससे रिटर्न में कितने चेंजेस आए. Next we have that the decision of the investor regarding the optimum portfolio depends upon two parameters, that is return and risk, and that too includes that investor wants to maximize the return and wants to minimize the risk. Depending upon these assumptions, the HM model can be explained in three steps. The very first step says that setting the risk return opportunity set. Next we have determining the efficient set. And next we have selecting the optimal portfolio. These steps can be explained with the help of these diagrams. In these diagrams, we have taken risk on x-axis and return on y-axis. Like the very first step says that setting the risk return opportunity set. Opportunity set means how many portfolio alternatives are available to the investor from which investor may select for the optimum portfolio. यानी कि इन्वेस्टर के पास ऐसे कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं जिसमें से वो एक चयन कर सकता है फॉर द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो. तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इन्वेस्टर के पास लेट अस से x नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हैं जिसमें से अलग अलग तरीके के पोर्टफोलियो क्रिएट किए जा सकते हैं. और आपको ध्यान होगा जब हमने पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न की बात की थी तो हमने कहा था कि जो पोर्टफोलियो है ऑप्टिमम होना चाहिए, उसमें सिक्योरिटीज ना तो बहुत कम और ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. यदि वो बहुत कम होगी तो उससे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और यदि बहुत ज़्यादा होगी तो वो सुपरवाइज करने में डिफिकल्ट हो जाएगा. तो फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी सेट इन्वेस्टर को अवेलेबल है जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सके. हमें इस डायग्राम में देखें तो एक्स एक्सिस पे जिसमें हमने रिस्क लिया है और वाई एक्सिस जिसमें हमने रिटर्न लिया है. हम ऐसा मान के चलते हैं कि इन्वेस्टर के पास लेट अस से A to Z सिक्योरिटीज हैं जिसके वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकता है. ABCD, ABCDEF, ABCDEFGH और एनी अदर सच कॉम्बिनेशंस. तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इनको हमने इस बाउंड्री के अंदर रिफ्लेक्ट किया है. यानी कि एरिया ऑफ AEHA इज द एरिया जिसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस लाई कर रहे हैं वो हमारे अपॉर्चुनिटी सेट को शो करते हैं. इस अपॉर्चुनिटी सेट में से इन्वेस्टर कोई भी पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर सकता है अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग. जैसे कि लेट अस से इस डायग्राम में यदि
gives maximum return for a required level of risk. Our next step is selecting the optimal portfolio. With the help of this diagram, the optimal portfolio cannot be selected. For this purpose, we will have to study the concept of indifference curve, जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। आपने पढ़ा है इंडिफरेंस कर्व के लिए कि इंडिफरेंस कर्व ऐसे सभी कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो कि इन्वेस्टर्स को सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। So in this diagram also we have taken risk on x-axis and return on y-axis. We have taken three indifference curves C1, C2 and C3, and the various combinations of these indifference curves shows the satisfaction level of investors. Let us say on C1 indifference curve there are points S1 and S2. The investor is getting same satisfaction from these portfolios. However, on the higher indifference curve C2, the options S3 and S4 is giving higher satisfaction than S1 and S2. Then on C3 indifference curve, the points S5 and S6 are given highest satisfaction in comparison to C1 and C2. इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी हैं इकोनॉमिक्स में वही सेम एप्लीकेबल होती हैं, यानी कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं करते, ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करते हैं और ना ही वाई एक्सिस को टच करते हैं। सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगी। So with the help of this concept, now the investor may select the optimal portfolio. For the selection of optimal portfolio, we have merged the above two diagrams. यानी कि हमने इन दोनों डायग्राम्स को मिला करके ये डायग्राम बनाया है जिसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि इन्वेस्टर का ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कौन सा है। आपको ध्यान हो इकोनॉमिक्स में जब हम ऑप्टिमल सिलेक्शन करते थे इसके लिए हम कंडीशन लेकर के चलते थे कि जहां पर हमारी लाइन बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट होगी, यहाँ पर इस केस में इन्वेस्टमेंट के केस में जहाँ पे एफिशिएंट फ्रंटियर इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट होगा वो लाइन हमारी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को शो करेगी। यानी कि इस डायग्राम में पॉइंट आर इज द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। यदि इससे नीचे का कोई पॉइंट इन्वेस्टर सेलेक्ट करता है तो वो कम रिटर्न देगा और इससे ऊपर का यानी कि C3 इंडिफरेंस कर्व पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्वेस्टर इतना रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। So according to this diagram, point R is the point of optimum portfolio जो कि given level of risk पे maximum return provide करेगा। इसके बाद आप देखते हैं रिटर्न कम होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। So this is the point of optimum portfolio. So this is the explanation in the form of 3 points: setting the risk return opportunity set, this one. Then we have determining the efficient set, this line A, G, E, H, and then we have selected the optimal portfolio with the help of this line. So we have discussed in today's lecture the Markowitz model with the help of its meaning, assumption,